केसेस की रेजोल्यूशन देखें जिसमें EDOs को कम से कम टाइम स्पेंड करना चाहिए, कुछ EDOs 50% टाइम उस पर स्पेंड कर रहे हैं। और जैसे आप अगर आप नीचे और एक्टिविटीज देखेंगे तो कुछ EDOs जो है उनके पास स्कूल काउंसिल्स या डिस्ट्रिक्ट रिव्यू कमेटीज के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, 0% जो है वो लोग कुछ EDOs ने वो जवाब दिया। इसका मकसद बस ये है कि आप देखें बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो EDOs के लिए बहुत अहम है, और हमें ये मिल के डिसाइड करना है कि एक EDO को अपने टाइम को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि EDOs को सिर्फ स्कूल इंस्पेक्शन करनी चाहिए या सिर्फ केसेस रिजॉल्व करने चाहिए। EDO को अपने टाइम का ख्याल रख के सही डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए कि वो स्कूल भी इंस्पेक्ट कर पाए, केसेस भी रिजॉल्व कर पाए, डिस्ट्रिक्ट रिव्यू कमेटी भी कर पाए, और बाकी सारे ये एक्टिविटीज में भी अपना टाइम दे सकें। Thank you, Sir. Thank you, Ali. It's wonderful having such beautiful EDO speakers on our team. Simon, I think you're going to introduce the next exercise. Very quick instruction for the next exercise, which is we'd like you to have a short conversation, no more than 10 minutes, on your tables about those results. Is there anything that surprises you? Does that look similar to how you spend your time? And what might you do potentially to shift your time from the things that you think are successful, which make the most difference, away from the things that you think probably are least successful? So what could you do to start to change the balance of your time and what you're spending your activities on? So I don't know if you want to just briefly do that now. Sure. So अभी एक डिस्कशन होगा अपनी अपनी टेबलों पे, जिसपे हम चाहते हैं कि आप ये सर्वे के रिजल्ट जो आपने जवाब दिए थे उसको डिस्कस करें और ये बात करें कि आपको क्या आप भी इन एक्टिविटीज़ पे इतना ही टाइम स्पेंड करते हैं, क्या ये सही है इन एक्टिविटीज़ पे इतना टाइम स्पेंड करना, और अगर नहीं है तो आप खुद और डिपार्टमेंट की मदद से किस तरह अपना टाइम शिफ्ट कर सकते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं उनमें। तो आप डिस्कशन शुरू करते हैं। 10 minutes. चलेगा और दूसरा जो हमें ये पता चलेगा साइंटिस्ट का पता चल जाएगा खुद हम दूसरे नंबर पर
reactions. Ali, I know your take had a very rewarding discussion. Can you summarize in under a slide? Sure. So basically, each video surprisingly has a different version and was quite different from the rest. Every video believes differently that we should spend different proportion of time in different videos. यानी कि basically यहाँ पर कोई consensus डेवलप नहीं हो सकता. हर वीडियो का अपना एक ذاتی राय है कि different activities में different percentage होनी चाहिए. इसमें कोई एक राय है. लेकिन as a sample वीडियो बहुत से गए, मुझे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी सेंसिबल लगी. वो बताएंगे कि आइडियली किस एक्टिविटी पे कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए और उसकी रीजन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेनली जो मेन इश्यूज हैं मतलब वीडियो तो स्पेंडिंग ऑफ टाइम उसका मेजर क्वेश्चन जो है स्कूल इंस्पेक्शन रिजल्ट्स, दूसरा रिजॉल्व इश्यूज केसेस लाइक दैट. और मैंने अपने तौर पर जो इसकी कैलकुलेशन की है 30% ओवरऑल टाइम का जो पर डे या पर ईयर कैलेंडर पे अगर आप डिवाइड करें तो मैं ये समझता हूँ कि 30% मुझे हर सूरत में मैनेज करना है अपने स्कूल को विजिट के लिए विद ओवरऑल माई एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मैं इन टारगेट्स को अचीव करना चाहता हूँ और आउटपुट देना चाहता हूँ. दूसरा 40% आल टाइप ऑफ इश्यू जिसमें तमाम इश्यूज आ जाएंगी, वो जो हम इसमें पब्लिक डीलिंग भी हमारी शामिल है. 40% टाइम इसको दूंगा. नंबर 3 पे प्रीमियर बजट डिस्ट्रिक्ट प्लान 10% इसके लिए मैंने एलोकेट किया है. मैनेज ट्रांसफर पोस्टिंग, चूंकि ये इश्यू आपके सामने आके 3 साल के बाद वैलिड हुआ है और मैं इसे एनुअल कैलेंडर में ले रहा हूँ और इसके लिए मैंने टाइम को महसूस किया कि एनुअल कैलेंडर में 365 दिन है तो मैं 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन इस इश्यू पे लगा रहा हूँ. तो इसको मैं 5% दे रहा हूँ. मैनेजमेंट काउंसिल जस्ट 1 मीटिंग टास्क है ये, इसके लिए 2%. प्रोवाइड डेटा बाकी वेरिएशन वगैरह इसके लिए 3%. ये एनुअल कैलेंडर में जस्ट 2 और 3 मीटिंग्स काउंट होती हैं और प्रॉपरली हो जाए तो इसको असेस किया जा सकता है. इसके बाद है कन्वर्स डिस्ट्रिक्ट व्यू कमेटी और ये हार्डली 1 या 1.5 घंटे की मीटिंग होती है और एक साल में अगर आप 9 मीटिंग्स करते हैं इसको मैं 2% पे लाऊंगा. परचेज कैपिटल गुड्स डायरेक्टली आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, ये आपके ब्रांच इस पे ज़्यादा मैं कोई टाइम एलोकेट नहीं कर रहा. मीट MNS MPF इसके लिए कोई टाइम नहीं. ये आ जाएगा उसी में रिजॉल्व इश्यू एंड केसेस में जिसके लिए 30% जो है एलोकेट किया जा चुका है. अदर मीटिंग्स के लिए इसके अलावा बनते हैं तो 2% और इसके अलावा ट्रेनिंग या इसके अलावा कोई मिसलीनियस में चीज़ आ जाती है तो 5%. मैंने फोकस किया है वो 2 चीज़ें हैं जिसमें स्कूल इंस्पेक्शन है और हमारी जो रिजॉल्व केसेस इश्यूज विद पब्लिक डीलिंग इस पे मैंने 70% टाइम इसके लिए एलोकेट किया. Thank you, Shukriya. Simon, in perfect Urdu, would you like to report back from your group? And coming up with issues other than core education priorities, be they intelligence, floods, health, and so on. Secondly, the amount of time taken in meetings and meetings with your DCOs. 2 very important points. I'll ask my colleagues to expand. Ladies and gentlemen, I believe the people present here are competent enough to lead the task they are assigned with. None of them is lacking in efficiency or determination. 80% of my time should be spent in school, meeting with the teachers, meeting with the students. The fact of the matter is that we spend more of the time in meetings which are never done in print. And that meetings are done at bureaucratic levels. These meetings help us out, not help us. This is what I have to decide. If we have to have a meeting, it is a good thing. It helps us out to have our agenda, set our targets. But for that purpose, we need time to go in the field. I believe my 80% of time should be there in school, in teachers, in students, and then report back my experience, what I have got out of the meeting. The fact is, we spend quality enough time in schools that is required to be.
you very is a desire to shift from the way you currently spend your time to something new with, you said, I think, a much bigger focus in the schools with the teachers, more time out there. People want to spend less time on things outside of education and more time on the core education work. They want to spend less time in meetings and more time focusing on changing things out in their district. Simon, I think you're going to introduce the next exercise at this point. Thank you. Thank you, Michael. And Saab will translate for you. Yes. This is your chance to redefine the role, to put the emphasis that you want in terms of how you should be spending your time, the priorities you should be working on, and how the role should be different. This is your opportunity. This is where it gets personal for you, because we're going to ask you not only to say how the EDO role should be different, but also say what behaviours you need to have, how you need to act, the skills that need to be different or you need to do more of in order to make that role happen. I'll just take time to explain that with my solution. तो ये अभी जो एक्सरसाइज जिसमें हम जाने वाले हैं ये समझें ट्रेनिंग की सबसे अहम एक्सरसाइज में से एक है, क्योंकि इस वक्त आपको ये मौका मिल रहा है कि आप बताएं कि एज ईडीओ आपकी एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए और आपको किन चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और इस एक्टिविटी का जो रिजल्ट होगा वो फिर हम डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर सबको ये रिकमेंडेशन एक तरह से जाएगी कि ईडीओ ये समझते हैं कि उनका टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल ये है। उसके अलावा दूसरी चीज जो इस एक्टिविटी में होगी वो ये होगी कि इस रोल को बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कारकर्दगी से इस्तेमाल करने के लिए आपको अपना बिहेवियर किस तरह चेंज करना होगा। तो ये बहुत एक अहम एक्सरसाइज है। So, we're going to ask you to spend the next 45 minutes up until 1:15 at lunch in your tables with the help of your facilitator doing two things. Firstly, having a conversation on your table and then with your facilitator recording on the cards how the EDO role should be different in future in order to drive improvements towards the goals that we all want to achieve. That's the first thing to do. Then the second thing to do, if you're going to achieve those tasks and get that job done, how do you need to behave differently? What skills do you need to have, what behaviours do you need to have, or do more of in order to make that goal happen? And then we'll ask you to record those issues on cards, so that at the end, in 45 minutes time, you have a sheet of brown paper that is filled with ideas of the new role and the behaviours, okay? And we also want to make this a little bit competitive. So after lunch, Michael will explain about this in more detail. We're going to ask you all to look at these brown sheets and see which of those you like, and Michael is going to award a winner. So we're going to have a winning group, a winning sheet of brown paper, the best